हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इतना शेयर करना चाहूंगा कि आज मैं वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करूंगा। देन आई विल बी टॉकिंग लिटिल बिट मोर इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग स्पेशली द फार्मा पैक, बिकॉज फार्मा पैक में कुछ मुझे खास दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली आई विल ऑल्सो अपडेट अबाउट द स्टॉक्स जो मैं पहले कुछ वीडियोज में शेयर कर चुका हूँ। एंड एट द लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ, बट आज का मैसेज थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो शायद काफी लोगों को सरप्राइजिंग भी लगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज, अगर मैं निफ्टी फ्यूचर्स को मैं अगर देखूं, मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेंड अभी भी ऊपर है। वी आर स्टिल एट अ सपोर्ट। यू कैन सी कि ये जो 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट है 24,151 का, ये अभी भी ठीक से प्राइस उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बट हालांकि यू कैन सी दैट प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज से थोड़ा सा और ज्यादा दूर है। एंड ये सपोर्ट जो है 23.6, इट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हाँ, हालांकि ये मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में, तो मंथली टाइम फ्रेम चार्ट का सपोर्ट जनरली डेली या वीकली या कोई भी और टाइम फ्रेम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बट दिस वन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बिकॉज इसका जो स्विंग है ये इतना बड़ा नहीं है इन कंपैरिजन टू ऑल रीसेंट स्विंग्स इन द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट। ठीक है, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट की बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम में यू कैन क्लियरली सी एक करेक्शन चल रहा है। ट्रेंड भी फ्लैट है, नीदर इट इज अप नीदर इट इज डाउन। और जो अगला सपोर्ट है वो करीबन 23,500 के करीब है। ठीक है, और इफ यू चेक द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ये जो कैंडल है इसको अगर मैं निकाल दूं कॉन्टेक्स्ट से, तो यहाँ पे देख के हमको जरूर लगेगा कि सेलिंग थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। बट वापस अचानक से यू कैन सी सेलिंग हैज लिटिल बिट पिक्ड अप on the last trading session. I'm not talking about the Diwali session. I'm talking one day before that. मैं थर्सडे की बात कर रहा हूँ, 31 अक्टूबर। तो थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग बढ़ा है। और जो नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पे, ये होगा 23,845 पे इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, और वीकली पे होगा करीबन 23,500 के करीब। नाउ एक चीज हमको यहाँ पे समझनी जरूरी है कि जब भी मार्केट आफ्टर अ वेरी बिग अप ट्रेंड, स्पेशली अगर हम वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखें, जनरली वेन एवर मार्केट टॉप्स आउट, और जो इनिशियल जो सेल ऑफ होता है ना, इनिशियल, दिस इज द इनिशियल सेल ऑफ। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 8-9% का सेल ऑफ हो चुका है निफ्टी में। ठीक है, मैं मानता हूं, बट अगर ये नीचे की तरफ और कंटिन्यू होने वाला है, अगर अभी ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सो द इन द इनिशियल स्टेजेस जनरली इट इज नॉट वेरी वेरी, यू कैन से कॉन्फिडेंस इंड्यूसिंग, यानी कि जो ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं, जनरली उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि जाके वो शॉर्ट करे मार्केट को। क्यों? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम इन अ बुल रन, जब भी एक मार्केट डिप होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा डिप हो, वो डिप बाय हो जाता है एंड मार्केट मेक्स अ न्यू हाई। यू कैन सी दिस थिंग, दिस हैपेंड ड्यूरिंग द इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन। ये डिप भी बाय हो गया और मार्केट ऊपर चला गया। सो दिस कीप्स ऑन हैपनिंग वेरी वेरी ऑफन। नाउ दिस टाइम व्हाट इट हैज हैपेंड इज कि ये वाला भी लो टूट चुका है, ये लो के भी हम करीब हैं। सो इफ यू ब्रेक दिस लो अगेन, बी मोर बैड फॉर द मार्केट। सो एज ऑफ नाउ इट्स लाइक, स्पेशली अगर मैं सिर्फ निफ्टी की बात करूं और अगर मैं 31 अक्टूबर का डेटा निकाल दूं, यानी कि कैंडल निकाल दूं, इट क्लियरली शोज दैट यस, सेलिंग स्लो डाउन हुआ था, बट आफ्टर दिस पर्टिकुलर कैंडल थिंग्स हैव चेंज्ड, यू कैन से। अगर आप 2 आवर्ली टाइम फ्रेम चार्ट में चेक करेंगे तो 2 आवर्ली टाइम फ्रेम चार्ट में आरएसआई, और अगर आर्ली टाइम फ्रेम भी चार्ट करें तो यहां पे भी आरएसआई हैज नॉट इवन वंस बीन एबल टू टेस्ट 70। Why I'm saying this, in a correction, जब RSI 70 को टच करता है और बुल रन चल रहा है, that is probably, not always, but probably a sign that once again strength is coming back. But ऐसा हो नहीं रहा है। RSI 50 के थोड़ा ऊपर जा रहा है and selling आ रहा है। So this is you can say a sort of weakness which is coming up. And again, as a trader, you should be very very careful when you're trading in Nifty. बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा चॉपी है। अगर हम ट्रेंड देखें मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में, यहाँ पे भी यू कैन सी मेनी मंथ से एक ही रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट इट इज वेरी चॉपी, ऊपर नीचे हो रहा है हर वीक। डेली टाइम फ्रेम चार्ट में तो इससे भी हालत खराब है, बहुत ज्यादा चॉपी है।
यू कैन सी यहाँ पे पॉजिटिविटी आई थी, अच्छा बिग ग्रीन कैंडल बना था, सडनली इट वेंट डाउन। अगेन यहाँ पे भी एक अच्छा बिग ग्रीन कैंडल बना एंड ऑन 31st of October it tried to surpass the high of this candle, okay, which was a good sign, but again क्लोजिंग पॉजिटिव में नहीं आया, सेकेंड बिग ग्रीन कैंडल नहीं बना, इसके ऊपर भी हाई के ऊपर नहीं गया, इनफैक्ट इट केम डाउन। सो आई थिंक वी आर कंसोलिडेटिंग, थोड़ा सा पॉजिटिविटी जरूर बना है आफ्टर द 29th October कैंडल, बट अगर उसके बाद रिपीटेटिव बाइंग नहीं आएगा then you will not be able to see some momentum, because कैसा है कि सिर्फ ट्रेंड से पैसे नहीं बनाए जा सकते, you need to have a strong momentum, continuous momentum on the upside, तो ही easily आप पैसे बना, easily is the wrong word, but तो ही आप पैसे बना सकते हो। so there is no momentum, and as a bank nifty trader I would try to be very very careful, but हाँ, अगर मैं PSU बैंक्स के बारे में बात करूं तो PSU बैंक्स में सबसे पहले मैं SBI के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। एसबीआई ने क्या किया है कि एसबीआई इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स राइट नाउ। अगर आप दूसरे बाकी सब स्टॉक्स देखें लाइक पीएनबी या कैनरा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, द वे द स्टॉक हैज शॉट अप इज अ गुड साइन, इट्स अ पॉजिटिव साइन, बट ये जो गैप है इतना बड़ा, इस गैप को सरपास नहीं कर पा रहा है एसबीआई ड्यू टू सम XYZ रीजन। इसके ऊपर ठीक से अगर क्लोज आ जाता देन इट वुड बी अ फर्स्ट साइन that probably PSU banks are trying to turn around on the upside. शायद अगर SBI ट्राई करता तो दूसरे सब स्टॉक्स भी शायद ट्राई करते, बिकॉज SBI इज द मेन की स्टॉक ऑफ द PSU बैंकिंग बैंक। बट इसके कंपैरिजन में अगर आप SBI को चेक करो और उसी के कंपैरिजन में अगर आप दूसरे सब स्टॉक्स देखोगे तो आपको दूसरे सब स्टॉक्स थोड़े से वीक लगेंगे। यू कैन सी दे आर जस्ट ट्राइंग टू पुल बैक। इफ यू सी इवन कैनरा बैंक, इट्स जस्ट ट्राइंग टू पुल बैक इन अ डाउन ट्रेंड। सो कैनरा बैंक, पीएनबी, दूसरे भी कुछ बैंक्स हैं, दे आर ऑल लुकिंग वीक। सो आई गेस अगर थोड़ा और पुल बैक इसमें आता है इन सम बैंक्स में, बैंक ऑफ बड़ौदा इज आई वुड से स्टिल ओके, बट बाकी जब छोटे छोटे बैंक है, इवन महा बैंक जो है, उन सब में अगर थोड़ा सा पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद देखना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट डज द सेकंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट और नॉट, बिकॉज जनरली इन वीक स्टॉक्स इफ यू जस्ट हैव अ लुक एट पीएनबी, ठीक है, आफ्टर एवरी पुल बैक, ये देखिए यहाँ पे एक पुल बैक आया, सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग, यहाँ पे भी एक पुल बैक आया है, तो और थोड़ा और पुल बैक आए और उसके बाद अगर एक सेल ऑफ दिखे, देन आई थिंक स्विंग ट्रेडर शुड कीप अ वॉच ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। और थोड़ा और पुल बैक आना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, क्यों पता है, पीएनबी में अगर आप देखोगे तो वीकली RSI 30 को टच हो चुका है, तो साइन ऑफ पुल बैक इज इमिनेंट। नाउ प्राइवेट बैंकिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर आप सेक्टोरल इंडाइसेस देखोगे तो उसमें आपको ज्यादा पता नहीं लगेगा, बट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे जैसे कि HDFC बैंक स्टॉक जो है, इट्स इन अ डिसेंट अप ट्रेंड। अभी HDFC बैंक है दोस्तों, इससे और ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इट्स अ स्लो मूविंग स्टॉक। सो आई बिलीव ट्रेंड अभी भी ऊपर है, सब कुछ ठीक ठाक है। आई थिंक द ब्रेकआउट केम विद इन दिस जोन, थिंग्स आर मूविंग अप। इट वॉज अ गुड टाइम पॉसिबली समवेयर इन दिस जोन, ये मैंने पहले भी बोला था, 1750 या उसके ऊपर अगर स्टॉक है तो इट्स अ गुड टाइम टू बुक पार्शल, एंड रेस्ट आई थिंक यू कैन होल्ड विद अ ट्रेलिंग स्टॉक। दूसरा जो मैंने एक स्टॉक शेयर किया है काफी दिनों से, वो है ICICI बैंक। इवन दिस स्टॉक गेव अ ब्रेकआउट ऑन 18th of October, इट मेड अ वेरी गुड राइज, यहाँ पे मैंने बोला भी था इट्स टाइम टू बुक पार्शल, नाउ द स्टॉक इज ट्राइंग टू कम डाउन। आई थिंक ट्रेडर शुड होल्ड विद अ ट्रेलिंग स्टॉप, अगर वो ट्रिगर हो जाए देन यू कैन गेट आउट ऑफ द मार्केट। और इस दोनों स्टॉक्स के अलावा एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव माय आईज फिक्सेटेड ऑन एनी अदर स्टॉक्स। एनर्जी पैक, एनर्जी पैक अगर हम मंथली टाइम फ्रेम चार्ट के हिसाब से देखें तो वी आर एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बट द वे prices are shaping up in the weekly and in the monthly time frame chart, it seems the momentum is shifting on the downside. Now the way this sector has come down, okay, the way the sector has come down right now, it could be near a decent support, you can see this, ठीक है, it is near a decent support, stock ये sorry index इसके नीचे गया, it gave a pullback, now it is at a decent support, और ये same support monthly time frame chart पे, so we cannot deny that. Now if I just share the list of stocks with you, like you just see GAIL, it has beaten down, RSI is below 30, okay. Hind Petro, if you see, it's relatively okay, but it has broken this low. IOC अगर हम देखते हैं, again it's weak. Reliance, the main stock, obviously it's weak.
and BPCL. Again, this is also weak. Again, RSI is close to 30. But अगर मैं रिलायंस को देखूं और मैं अगर इसको कन्वर्ट करूं लाइन चार्ट में, so there are signs of positive divergence over here for sure. I would just like to highlight that particular part. देखिए लोअर लो यहाँ पे है, इन दो लो को मैं अगर कनेक्ट करता हूँ और इन दो लो को मैं कनेक्ट करता हूँ तो दिस इज very good positive divergence. So there are signs that there should be some sort of pullback happening. ये मैं शायद लास्ट एक या दो वीडियो से बता रहा हूँ. So after a pullback what happens, that is very very important because कैसा है कि pullback आने के बाद कितना pullback आता है, that is the first thing. Second thing is if the overall stock is going to remain weak, the stock will give a pullback and then again the second leg of selling will start. Now that is obviously नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं धीरे धीरे करके अपडेट करते जाऊंगा एज द स्टोरी अनवेल्स इन द स्टॉक एंड इन दिस सेक्टर. बट इट सीम्स दैट द स्टॉक्स इन दिस सेक्टर एक्सेप्ट हिंद पेट्रो दे आर लुकिंग वेरी वेरी वीक एंड इफ दे गिव अ राइज आफ्टर द फर्स्ट राइज व्हाट इट हैपेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी कभार कैसा होता है कि फर्स्ट राइज के बाद अचानक ब्रेकआउट आ जाता है और या फर्स्ट राइज के बाद सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट होता है विच इज व्हाट यू सॉ इन पीएसयू बैंक्स. सो आई गेस इट्स अ वेट एंड वॉच थिंग. हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और टाइम के साथ देखना पड़ेगा कि आफ्टर द फर्स्ट राइज व्हाट हैपेंस इन दीज स्टॉक्स. मेटल पैक. नाउ मेटल पैक अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम चार्ट देखूं तो दे आर कंसोलिडेटिंग. वीकली टाइम फ्रेम चार्ट वी आर कंसोलिडेटिंग. ट्रेंड इज वेरी वेरी फ्लैट. इन द daily time frame chart the trend is down but we have been able to give a pullback. I would say one stock which is Hindalco. It is one of the strongest stocks you can say because it has not broken the previous low. That is one thing, but there is no momentum visible. If the metal pack tries to go higher, then I think my focus would be on Hindalco. And one of the weaker stocks जो मैंने बहुत टाइम पहले एक स्टॉक शेयर किया था जो पहले weak nahi, that was strong stock but now it seems it has gone slightly weaker after breaking the support. So it's trying to pull back. After a pullback what happens, I think we should keep a watch on this particular stock. But overall मैं अगर metal pack के बारे में बात करूं तो metal pack is extremely stock specific. There is no specific view for metal pack overall कि भाई सेक्टर ऊपर जाएगा या सेक्टर नीचे आएगा. It is very very stock specific. So थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए. ऑटो पैक के बारे में अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल ऑटो पैक हैड शॉट अप अ लॉट. अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑटो पैक बहुत ज्यादा बड़ा है 2020 के बाद एंड इट हैज करेक्टेड. इवन ओवर ईयर इट हैज करेक्टेड प्रीटी नाइसली. इट सीम्स दैट वी आर एक्सट्रीमली ओवरस्ट्रेच्ड ऑन द डाउन साइड. थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना ऑटो पैक में या थोड़ा सा पुल बैक होना कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरे हिसाब से. फाइनेंस पैक in the monthly time frame chart things are fine. Weekly time frame chart mein we are consolidating. Even in the daily time frame chart we are consolidating. There are high number of stocks in the finance pack. Finance pack stock से भरा हुआ है but मुझे एक ही stock पसंद आया इन सब में से as of now, which is Bajaj Finserv. Bajaj Finserv has corrected from the top and in the monthly time frame chart trend is up. In the daily time frame chart we are close to a support. So if at all the finance pack starts moving up, okay, then the first stock which I will have my eyes focused on is going to be Bajaj Finserv. Okay. और अगर आप बजाज फाइनेंस के बारे में भी बात करें, सो ओवरऑल यहाँ पे हमको कंसोलिडेशन दिखेगा, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन दिखेगा वीकली और मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में. ठीक है. बट अगर मैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट की बात करूं तो ये प्रीवियस हाई है. इस प्रीवियस हाई से वी हैव सीन अ वेरी गुड पुल बैक. नाउ इफ दिस पुल बैक आफ्टर दिस इनिशियल पुल बैक अगर हम लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे देखें, वी आर कंसोलिडेटिंग आफ्टर दिस इनिशियल पुल बैक. इफ दिस बॉक्सी फॉर्मेशन विच इज ओवर हियर, मैं बॉक्सी इसको क्यों बोल रहा हूं, you can see this sort of slant on the downside but is boxy formation. Once again if we have a vertical move on the upside, then some positivity will be visible in Bajaj Finance also. But in comparison, Bajaj Finserv is slightly more positive than Bajaj Finance. Consumption pack, I think the way it had rallied in the monthly time frame chart, in the weekly time frame chart, it needed a correction since many months, many weeks. But you know, at times in bull run,
things can be delayed on the downside because it is a bull market. Now it has corrected a lot. We are near supports. Now there are a couple of stocks which are, you can say, debatable, because on the daily time frame chart they will look slightly weak. One is Asian Paints and second one is Berger Paint. Okay, this is the second stock, and one more stock is Voltas. Now these are the three stocks which I have in my focus right now, and I would say none of them are ready for a swing trade on the upside. But if they consolidate, if they rise a little bit, then maybe my interest in these three stocks like Bajaj Finserv, Asian Paints and Voltas थोड़ा सा बढ़ेगा. Voltas और भी ज़्यादा weak है, but it is at a support. That is the reason I have my eyes on it. But it's not going to be easy. I think it will be very, very difficult to trade in this particular sector because the momentum with which the stocks are coming down, especially in the consumer pack, is really, really horrible. You can see the way it is a sort of a vertical fall. But अगर हम RSI पे ध्यान दें तो RSI below 30 है, and a pullback, yeah, a consolidation is possible. And after the consolidation, what happens after a few days will be very, very interesting. FMCG also, it had rallied pretty nicely in the monthly, especially in the weekly time frame chart. मैं शायद काफी टाइम से बोल रहा था कि FMCG करेक्ट होना चाहिए. It corrected a little bit late. यहाँ पे एक previous support था, वो भी hold नहीं हुआ. We are now below that support. Again, now we are at a next support. ठीक है. Now, if the entire pack, if the entire sector in the FMCG pack wants to go on the upside, तो सबसे पहले मैं नजर रखूंगा ITC पे, because ITC is the king of FMCG pack. If this stock starts moving, only then I will start looking at other stocks. That are other stocks also interesting, because as a trader मेरा नेचर ऐसा है कि मैं किसी एक स्टॉक को लेके सिर्फ ट्रेड नहीं करूंगा कि भाई FMCG पैक सपोर्ट पे आ गया है, ITC अच्छा लग रहा है, चलो मैं इसको उठा लेता हूँ, इट्स अ गुड स्टॉक. नो, along with ITC, if other 3-4 stocks are moving, तो शायद ये चार में से मैं दो को ट्रेड करूंगा. Because it will be a confirmation that at least that entire sector is moving rather than picking one particular stock. And if other stocks are sliding, only one is performing, then the possibility of performance on the upside will also reduce. And as a trader, I will not have much psychological confidence in that particular trade. Okay. Infra pack. Infra pack, I think it needs a little bit more consolidation, and only after that I'll be able to share my next view. IT pack. Now IT pack is extremely debatable. I think यहाँ पे मैंने resistance share किया है काफी time से. It has corrected pretty nicely. Infosys also, it has come down pretty nicely. Infosys काफी अच्छा नीचे आ गया. It is at a trend line support. Although ये trend line support बहुत ज़्यादा strong नहीं है, आपको दिख रहा होगा. This is a probable trend line, not a actual trend line, but a probable because it has been tested 2 times. But RSI is at 30. We are also at a weekly support. So this is one thing which we need to understand. It is not extremely attractive, but in case if the entire IT pack suddenly starts pulling back on the upside, तो मैं Infosys को जरूर एक बार देखूंगा. और दूसरा स्टॉक वो है TCS. Now TCS is also one stock. The way it has corrected is horrible. It is really a very deep cut in the daily time frame charts. But one of the important points, what I can see over here, that we have started getting a positive divergence in the price and the RSI. ये देखिए, lower low, higher low, and we also have a certain positive candle formation in the last 2 days. So this is sort of a contrarian sign, not a trend follower sign, sort of contrarian sign that something good is happening in the TCS. Until and unless it doesn't close below 3900, I think some sort of pullback is probable. Now that pullback will convert into a breakout or not, ये obviously सिर्फ time बता सकता है. Now time for pharma pack. ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि फार्मा पैक एक ऐसा सेक्टर है एज ऑफ नाउ, एंड आई एम ओनली टॉकिंग विद अ व्यू पॉइंट ऑफ अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर. मैं बिल्कुल भी पोजिशनल ट्रेडर के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ. सो एज अ ट्रेडर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि फार्मा पैक इज वन ऑफ द सेफर हेवन for long only traders, because there are few stocks which are looking attractive. One of the stocks which is holding on, it's not rallying pretty nicely, but it is holding on, you can say. It has not been able to make a higher high,
but it is also not making a lower low. So it is sort of forming a triangle formation or something. Now if it gives a breakout, then obviously it will try to rally on the upside. ठीक है, ये सब वक्त बताएगा, but it is looking fine, it's looking okay. And और एक स्टॉक की अगर मैं बात करूं फार्मा पैक में, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक होगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, थिंक, हाँ, it will be Sun Pharma. So Sun Pharma, what has happened, it is after the first correction, after the first fall, suddenly it gave a rise, it gave a fall, and it's now not ready to go up. So this is one stock which you can look up to. One another stock in Pharma pack is again Lupin. This is also one stock which is possibly looking more stronger than other stocks, the way it has rallied. If it starts giving momentum, then momentum traders, not swing traders, but momentum traders should give it a shot. Okay. But again, even in Pharma pack, मैं ये जरूर बोलूंगा कि Pharma pack, भले ही मैंने बोला कि अच्छा लग रहा है दूसरे सेक्टर्स के कंपैरिजन में ऑन द अपसाइड, बट अगेन ओवर ईयर यू कैन नॉट जस्ट पिक एनी टॉम डिक एंड हैरी. आपको यहाँ पे भी स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ेगा, वरना आप पैसे यहाँ पे नहीं बना पाओगे. ठीक है. नाउ गोइंग अहेड आफ्टर फार्मा पैक, अगर मैं पीएससी सेक्टर और रियलिटी सेक्टर दोनों के बारे में बात करूं, आई थिंक बोथ ऑफ द सेक्टर्स इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, they could be at a support. They could be, you can see over here, we are at a support over here. This is a very strong support. Even in the reality pack, it is a very strong support. But in the daily chart, they are looking very, very weak. They are looking as if कि भाई pullback देने के बाद वापस एक बार selling आ ही जाएगी. So I think this is a time where we should start focusing on PAC and reality pack. If the pullback comes, अभी ध्यान से सुनिए, अगर pullback आता है तो पुल बैक के बाद क्या होता है वो ध्यान रखना जरूरी है. अभी आप बोलोगे सर आप हर बार यही बोल रहे हो कि पुल बैक के बाद क्या होगा, वो ध्यान रखना जरूरी है. वो मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि क्या आप डाउन ट्रेंड में, फिलहाल तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो क्या डाउन ट्रेंड में फॉलिंग नाइफ में आप बाइंग करोगे? नहीं, दैट्स रॉन्ग. विल यू ट्राई टू शॉर्ट अ स्टॉक व्हिच इज गिविंग अ पुल बैक? आंसर इज नो. इफ द स्टॉक गिव्स अ पुल बैक, अगर पुल बैक खत्म हो जाता है एंड देन आफ्टर अ पुल बैक इफ इट tries to go down, then can you short? The answer is yes. If after the pullback the stock continues to go higher, the entire sector continues to go higher and it is showing कि मैं भाई अभी ऊपर की तरफ breakout देने वाला हूँ, does it make sense to buy those breakouts? The answer is yes. So कभी कभार ना एज अ ट्रेडर हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है पेशेंस के साथ कि अच्छा चार्ट पे फॉर्मेशन मिले, प्राइस पैटर्न्स मिले और उसके बाद ही हम कुछ नया ट्रेड करें. ऐसे ही कोई भी टाइम पे मार्केट प्रेडिक्शन करके ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है. ठीक है. सो ये एक चीज ध्यान में रखिए. एंड मिड कैप के बारे में भी मैं यही बोलूंगा. आई थिंक मैं मिड कैप भी काफी ऊपर से नीचे आ गया. इट सीम्स थोड़ा सा कूल ऑफ अच्छा हो गया. इट इज एट अ डिसेंट सपोर्ट. सपोर्ट से पुल बैक भी आया. पुल बैक के बाद नाउ इट्स ट्राइंग टू गो डाउन और इट्स ट्राइंग टू गो हायर. ये देखना पड़ेगा. ठीक है. नाउ द टाइम फॉर द लास्ट मैसेज. देखिए मार्केट एक ऐसे जंक्चर पे है, एक ऐसे लेवल पे, एक ऐसे मोमेंट पे जहां पे बहुत सारे ट्रेड्स इनिशिएट मत करिए. पहले समझिए कि मार्केट करना क्या चाहता है. इज इट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू इंटरमीडिएट करेक्शन ऑन द डाउन साइड? बिकॉज मार्केट बढ़ा भी काफी है ऊपर की तरफ. इफ द मार्केट इज गोइंग टू करेक्ट, इफ द मार्केट इज शोइंग द मूड दैट आई वांट टू करेक्ट, देन एज अ ट्रेडर ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा स्विंग ट्रेड्स पे कि भाई पुल बैक के बाद अगर मुझे बेचने का मौका मिले नीचे की तरफ, मैं उसकी तरफ फोकस करूंगा. अगर मार्केट, ओवरऑल मार्केट या एक पर्टिकुलर सेक्टर भी बॉटम आउट हो रहा है या ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, देन माय फोकस विल बी अगेन गोइंग लॉन्ग, वेदर इट इज अ स्विंग ट्रेड, वेदर इट इज अ पोजीशन ट्रेड. सो एज ऑफ नाउ अगेन we are still not at a juncture in the market where we need to predict or try to think out of the box or do something fancy. No, stick to the basic, have patience, let the market itself, market को खुद को बताने दीजिए कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, मैं नीचे जाना चाहती हूँ या ऊपर. उसके बाद ही आप अपने ट्रेड्स इनिशिएट करें. Not having positions at some time is also having a position, because you will also save a lot of money.
बाय नॉट डूइंग बैड ट्रेड्स। ठीक है, सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको लगता है कि आपका नॉलेज इस वीडियो से बड़ा है, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, दूसरे ट्रेडर्स के साथ भी शेयर करिए जिनको मदद मिले इस वीडियो के थ्रू। ट्रेड लेस, ट्रेड वाइजली। थैंक यू।